अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवश है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। सर तो मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती। सर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज़ नहीं कज़ा करते और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विज़डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू योर विज़डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह की बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीज़न क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? बहन का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है। वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल अगर मैं सही सुना बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वजह का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है। आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। So if any sisters have any questions, they're most welcome to ask. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? Sisters asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that's the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much.
to try and make us understand that hadith was the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic, and even the age of 6 and 9 is authentic, and how to justify that. When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15. In America, it's about 12 to 13. And the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today, medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today, after science advance, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today, in America, as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts a menstrual cycle at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16. The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal, but in India it's illegal. Now why has India chosen 18 and America chosen 16, we don't know. And there's a state in America called Texas, where coming down generations that it's common to marry early. So therefore in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society. So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured. And alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad. There are some people who say, that's fine, she could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9, once a lady is matured, it's perfectly fine. Hope that answers the question, sister. यही नहीं अभी और सुनिए Tirmidhi, volume 2, hadith number 1109, in which Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says, she says that I married at the age of 9. After I attained puberty, I married and I consummated the marriage with the Prophet after she attained puberty at the age of 9. There are various hadith. I know that there are some so-called pseudo-Islamic dais or pseudo-Islamic scholars who say no, the age of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, it was in 9, it was 19, and they give various arguments. They say in the Arabic language it's Ashra and Tesa, 10 plus 9, the 10 was missing, actually it is 19, and various other things. All this is totally nonsense. There is not an out of doubt as far as the age of Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है. चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए. बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते. मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं. तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो. कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन. हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया कुरान में. सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए. मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए. टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. कुछ प्रॉब्लम है आदमी में. आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से. वो अलग बात, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या हलचल होना चाहिए. नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है. आप समझे ना, ये उसूल है. तो कुरान की आयतें गुज़रे बसर करो. तो अगर ख़वातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूँ तो मैं गुनहगार नहीं. ख़वातीन जो आ रही है टेलीविजन पे, तो दो तरीके से ताली बजती है. अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके बाद छिड़का नहीं करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी. तो दोनों की ताली दुआ से बजती है.